Hi students, welcome to S4 Sharnya Science classes. In the previous classes, we have given the introduction to is the matter around us is pure, right? And elements के बारे में भी हमने थोड़ा बहुत introduction किया है, right? Now in this session, we are going to discuss about elements that actually what are the properties, right? So what are the types of elements and what are their properties that we are going to discuss. After that, we will go for compounds and mixtures. So come back here. Elements, right? So we have already learned what you mean by element. Elements are the pure substance which is actually having only one type of atom, right? तो सिर्फ एक type की atom से बना हुआ pure substance को हम elements बोलती है. This term element is actually coined by, right, Robert Boyle, right? So Robert Boyle ने ये term element दिया था. After that उसको successful definition Boyle ने नहीं दे पाई, right? So that actually given by Lavoisier, right? So experimental definition वो establish किया है Lavoisier ने, right? So we already discussed that the pure substance which is having only one type of atom, then we will name it as element, right? Totally the element can be divided into three category, right? तो हम elements को three category में mainly divide कर सकते हैं. एक है metal, एक है non-metal and the तीसरी one non-metalloids, right? What do you mean by metal? Metals are actually हमने that ना छोटे क्लास में maybe you have learned about cation and anion, right? तो हमने already बताया भी है cations are cations. Positively charged atoms they are called cation. जिसके positive ये plus देख लो positive, right? And negatively charged atoms को हम बोलती हैं anions. Atoms or ions, anions, right? So metals are those elements which can easily form cations. जैसे कि हम बता रही है ये एक metal है. Once electron loss हो जाती है इसमें से, then it will form M plus and electron loss हो गया. Right. So we know that there are subatomic particle electron, proton and neutron. Right. तो एक element से एक electron loss हो जाती है उसको एक positive charge मिल जाती है. And this is actually cation. इसके बारे में हम class 10 में detail में learn करेगी और next chapter में भी हम ation, cation, anion के बारे में learn कर लेंगे. Structure of atom में. That time I will again repeat it. But now just for understanding the definition of metal, I am telling this. So metals are those substance, those elements which will easily form cations. It will easily lose their electrons and form cations. They are called metals. ठीक है? So what about non-metals? Non-metals are those, for example, non-metals हम बता रहे हैं N है, right? They will form anions by gaining electrons. जो इलेक्ट्रॉन लेकर नेगेटिवली चार्ज आयोन्स बनेगा, that is such anion. They are non-metals. जो इलेक्ट्रॉन्स देकर लॉस कर पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम्स और आयोन्स बनेगा, दैट्स एक्चुअली मेटल्स. वंस अगेन मैं रिपीट कर रही है, मेटल्स आर दो सब्सटेंस विच विल लॉस देयर इलेक्ट्रॉन, राइट, टू फॉर्म कैटियंस, दैट्स एक्चुअली पॉजिटिवली चार्ज्ड, राइट. नॉन मेटल्स आर दो सब्सटेंस विच विल गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नेगेटिवली चार्ज्ड एनियंस, राइट. आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी विल लर्न इन नेक्स्ट चैप्टर. बट फिर भी आपको समझना है व्हाट इज द डिफरेंस, मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है. तो अभी हम जा रही है व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की एग्जांपल एंड देयर प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करने वाला है. Metals you can see that sodium, potassium, iron, copper, these all are coming under metals. That means you can see that mostly at least iron, copper तो आपका familiar metals है, right? Mostly in home we are using that अलग अलग use करने के लिए, right? So these are metals, iron, copper. You can see that they are really hard in nature, right? So most of the metals are hard in nature, right? Exception is there like sodium and potassium, they are somewhat soft. But most of the elements, most of the metals are really hard in nature. What are the other physical properties? जो हमको दिखने में, what are the other physical properties of these metals? We are not going in detail. Class 10 में there is a chapter metal and non-metal. In that we are going in detail. But फिर भी हमारी introduction we are doing here, right? So metals, they have luster. That means they are shiny in their appearance. Mostly आप देख लो कोई भी what will you say that iron की rod है, right? Iron की eel, right? What will say iron nail, we can say that, right? So a fresh है, not rusted one. I'm just telling that that a fresh one, it will have a shiny appearance will be there. Just leave that. Gold, silver, whatever it is, they have a shiny appearance. That means they have luster,
right? So they, most of the metals are lustrous in nature, right? So they have metallic luster. Metallic luster means a shiny appearance is there, right? For example, silver के लिए a grayish white luster is there, right? And gold के लिए तो golden yellow color की luster है, right? So this is actually only meant for metals. But what about non-metals? Non-metals को comparatively dull appearance है. We will discuss that later. Right. Now, what is the structure? What is the कौन सी state में metals you can see that? Metals mostly solid and liquid stage में होती है. Most of them are in solid state. Right? जैसे कि हमारे copper है, iron है, right? So sodium है, potassium है, these all are solid state में. And there is only one metal which exists in liquid form at room temperature, that is actually Hg. This is actually mercury. Right, this is the only metal which exists in liquid form at room temperature. बाकी सारा solid stage में है, right? So this is the only metal which exists in liquid stage at room temperature. Remember that, right? And what about their conductivity? They are very good conductors of heat and electricity, right? क्यों है? Obviously you can see that metallic हमारे जो किचन में यूज़ करने वाली तवा, right? Mostly metal से बना हुआ है, means iron, right? So they all are metallic, right? So क्यों? Because they are actually very good conductors of heat and electricity. घर से जो what is say wiring होती है उसके अंदर copper you can see that, right? हमारा electricity pass करने वाला lines which is actually made up of aluminium, right? So these all are very good conductors of heat and electricity. और भी आपने देखा होगा कुछ मेटल्स के लिए ना दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स, जैसे कि सोड दैट गोल्ड है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, दीज आर द बेस्ट कंडक्टर्स, राइट? तो सबसे बेस्ट है गोल्ड एंड सिल्वर, राइट? बट फिर भी हमने यूज़ नहीं कर रही है इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए. इट विल बी वेरी यूजफुल, राइट, इफ़ दे आर यूजिंग गोल्ड वायर और सिल्वर वायर, राइट? तो वो रीजनेबल नहीं है, इसलिए वी आर नॉट यूजिंग. सबसे रीजनेबल है और उतना दैट मीन्स एक्चुअली चीप, राइट, कंपैरेटिवली चीप है वो एल्यूमिनियम है, एंड दैट इज़ वेरी गुड कंडक्टर्स ऑल्सो. घर में हम यूज़ कर रही है कॉपर वायर, राइट? सो दैट्स एक्चुअली इनसाइड हमारे होम है, कोई भी काट कर नहीं लेकर जाएगा. सो दैट्स इट. मे बी अनदर थिंग यू हैव सीन दैट जब हम कुछ व्हाट से यूटेंसिल के लिए, राइट, तो आपका चाय की इतना वाटर से तवा होगा, वॉट एवर इट इज, दे विल हैव ए कॉपर कोटिंग अंडरनीथ, राइट? क्यों कॉपर की कोटिंग? दैट ना बर्तन यूटेंसिल तो बना हुआ है स्टील से, राइट, और वॉट एवर इट इज, एंड दे विल हैव स्पेशल कोटिंग ऑफ कॉपर. वाई? क्योंकि वो इट इज़ वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, राइट? तो वो कॉपर की कोटिंग है तो ईजिली वो दैट ना गर्म हो जाएगा, राइट? मे बी यू हैव सीन सच एग्जाम्पल इनफ इन योर होम. ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा बट आप देख लेना, राइट? और आपका प्लग में कभी कभी इलेक्ट्रिकल प्लग में साइड में एक गोल्ड कलर की कोटिंग हो जाती है, राइट? सो दैट कोटिंग इज एक्चुअली इन द कॉन्टैक्ट में है, तो इट विल बी ईजिली कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम डे टू डे लाइफ में है, right? So that's why we are telling metals are very good conductors of heat and electricity, right? And another thing is that they are malleable in nature. क्या है malleability, right? Class 8 में maybe you have learned that malleability means कोई सा भी substance को, if you are metal को especially, if you are beating that you can make into thin sheets, right? So gold foil, silver foil, aluminium foil, है ना, बिल्कुल पतला सा sheets बना सकते हैं. That property को हम बोलती है malleability. And the substances we will tell that they are malleable, right? So it is a property of a metal or substance which can be beat and we can make into thin sheets. They are called malleability, right? So metals are highly malleable in nature, right? So we can make into thin sheets. इसलिए तो gold foil, aluminium foil, silver foil तो बना रहे थे. नहीं, ये तो possible नहीं है, right? And that's property is called malleability, right? So they can convert into thin sheets, right? So most of the metals are malleable nature. What about ductility? Ductility है, we can make, right, we can extend them into, right, what would say, we can make them into thin wires, right? So that property को हम बोलती है ductility, right? So that means metals को we can make into thin wires. इसलिए तो हम copper की wire, right, aluminium wire, और even सबसे ज़्यादा malleable and ductile है gold. That's the reason why we are using them for making jewelry. We can make designs. बिल्कुल हल्का पतला सा वायर बना सकते हैं. वी कैन मेक इनटू डिजाइंस इनटू दैट, एंड दे आर लीस्ट रिएक्टिव मेटल भी है, इसलिए गोल्ड ज्वेलरी वगैरह हम बना देती है, राइट? सो हियर वी आर डिस्कसिंग दे आर डक्टाइल, दैट मीन्स वी कैन मेक इनटू थिन वायर. दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी, राइट? सो मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर, वी कैन मेक दम इनटू कन्वर्ट दम इनटू थिन वायर्स. सो हमने मैलेबिलिटी बोला है, डक्टिलिटी बोला है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम बता रहे हैं, दे आर एक्चुअली सोनोरस इन नेचर, राइट? उसके लिए भी एक एग्जाम्पल मैं बताऊंगी सो दैट यू विल अंडरस्टैंड.
Mostly in the schools, not at all now, in olden schools and all, right? Kuch schools mein abhi bhi hoga, right? There will be metallic bell will be the iron bell, right? Uske upar ek iron rod se tin 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 suna hoga na, right? So what is that actually? Whenever a period ki that na break hoti hai or last bell hoti hai, this is that actually the signal, right? The bell. अब आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक बेल सभी जगह में इलेक्ट्रिकल बेल यूज कर रही है, बट दिस वाज द थिंग वी आर यूजिंग इन प्रीवियस डेज, राइट? सो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट? It's actually, it's a property of a metal which will produce sound, right? Sonorous, right? So sound when it is hit by another substance. That's a property of a metal. उसी जगह में आप प्लास्टिक यूज करो, the sound will be there. No, it will not be there. कोई stone पत्थर यूज करो, no, there will be no sound. It's a special property of a metal which will produce sound when hit by an item, right? So that's why it is called sonorous in nature, और sonority हम बता सकते हैं, right? So that's why we are telling they are sonorous in nature. बीच में थोड़ा सा disturbance आ गई, so they understand वो metallic sonority sound produce किया है. I hope you understand what you mean by sonorous, right? So what is that sonority? Once beat by another substance, it will produce sound, right? So metal have that property of sonority, right? So when it is beat by other item, it can produce sound. That's a special property of a metal. So we can say that they are sonorous in nature, right? So these are the general property. इसके अलावा भी बहुत सारी property. I told that class 10 में we have to learn the physical and chemical properties of metal and non-metal. That time we will discuss in detail. Now we are going to the non-metal. Just इसको compare करके learn करेगी. Learn करने की easy तरीका है, compare करके learn करो. So it will be very easy to understand, right? तो हमने जो points इधर discuss किया है, that we will discuss here also, right? Again, one more definition we are going. Non-metals are substance which will form anions or negatively charged ions or atoms by gaining electrons. वो लेती है हमेशा, है ना? Examples are oxygen, hydrogen, fluorine, chlorine, carbon, etc., etc. Right? So there are enough examples are there. What about these things? These are, you can see that these mostly gaseous है, chlorine, right? और carbon, right? हमारी carbon के अलग अलग forms है, diamond है, और what is it, graphite है, right? कोयला, cork, right? What enough substance are there, right? तो इसमें mostly what about their appearance? वो mostly dull in appearance है, कोई shiny surface तो नहीं है, right? Exception से iodine, there is iodine, it's a non-metal. It has a shiny appearance. और कार्बन की एक फॉर्म होती है डायमंड, विच इज 100%, उसको शाइनी अपीयरेंस तो है ना? सो डायमंड इज हैविंग ए शाइनी अपीयरेंस. दीज टू आर द एक्सेप्शंस. बाकी मोस्टली नॉन मेटल्स हैविंग ए डल अपीयरेंस, राइट? और कलर, दीज आर मोस्टली कलर्ड कंपाउंड्स, यू कैन सी दैट ऑफ दिस नॉन मेटल्स. फॉस्फोरस मोस्टली रेड कलर में होती है, फ्लोरीन पेल येलो कलर में होती है, क्लोरीन येलोइश ग्रीन कलर की गैस है. सो दीज आर हैविंग कलर्ड सब्सटेंस ऑल्सो, राइट? और इसका फिजिकल स्टेट क्या है, कौन सी स्टेट में ये एटमोसफियर में, यू कैन सी दैट मोस्टली दीज नॉन मेटल्स आर इन ऑल 3 स्टेट, यू कैन सी दैट. सॉलिड, ऑब्वियसली कार्बन वन एग्जाम्पल है, वेरी गुड एग्जाम्पल, राइट? ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल विच एक्सिस्ट इन लिक्विड स्टेज एट रूम टेम्परेचर. जब हमने मेर्कुरी के बारे में बोल दिया था, विच इज अ मेटल विच इज एट रूम टेम्परेचर, राइट, इन द लिक्विड स्टेज, it is the bromine, right? Bromine is the only that non-metal which exists in liquid stage at room temperature, that we have to remember. और gaseous, oxygen, hydrogen, fluorine, chlorine, ये सारे gaseous form में भी है, right? So here non-metals can be seen in solid, liquid, gas, 3 form में you can see that. But what about metal? Metal mostly solid and और liquid में सिर्फ mercury है, बाकी सारा most of the metals are in solid form, right? Now what about the conductivity? Right, conductivity, obviously air is a very poor conductor, right? So you can see that whatever that gaseous molecules we are telling, they are poor conductors of heat and electricity, right? And they are non-lustrous, हमने already बता दिया था, right? So what about sonority? ये gas कोई भी sound produce नहीं करती है, so they are non-sonorous and they are non-malleable, non-ductile, right? And these all are the physical properties of non-metal. What about metalloids? Metalloids are substance which is having the property of metal and non-metal. That means थोड़ा सा metal की property है, थोड़ा सा non-metal की property है, बीच में आ जाती है, right? So example boron, silicon, germanium, etc., which will show both the property of metal and non-metal together. I hope you have an idea about this. Thank you. Hi everyone. If you like this video and if it is helpful for you, please like my video and share with your friends. And please subscribe my channel and support me. And don't forget to press the bell icon so that you will get the regular notification.
Thanks for watching. See you soon.